Hello, Namaste, and good evening to all. I welcome you all to my nursing academy. And today I am going to take about the OBG topic, that is the female reproductive system. Students, in your first year BSc nursing, you have almost all you have learned about the female reproductive system. And today we are going to once again have a brief idea about the female reproductive system. In the female reproductive system, we are going to see about the uterus. Okay, now uterus. What is uterus? Uterus is a hollow muscular organ and it is weighing about 50 to 60 gram. The what is the normal weight of the uterus? It is around 50 to 60 gram, and the shape of the uterus is pyriformed shape. And the measurement of the uterus measures about 8 centimeter in length, then 5 centimeter in the breadth, and 2.5 centimeter in the thickness. So this is a just brief anatomy of the uterus. What is uterus? Uterus is nothing but a hollow muscular organ with a pyriform shape. Okay, and it is measuring about 8 centimeter in length, 5 centimeter in breadth, and 2.5 centimeter in thickness. The normal weight of the uterus is around 50 to 60 grams. Then what are the other structures associated with the uterus? With the uterus, the uterus is having two fallopian tubes. That is on the one on the left side and the right side. There are two fallopian tubes and the two ovaries. That is left and right ovary. Now let us begin with the various parts of the uterus. How the uterus is been divided. You can see in the slide here the uterus is been divided into three parts. Okay, so the first part, okay, this the bulged part is known as the fundus of the uterus. From this fundus of the uterus till the internal os, this area is said to be what? The corpus of the uterus, and it is measuring about 5 centimeter in length. And the body of the uterus, the area of the insertion of the fallopian tube, from the area of this insertion of the fallopian tube till the end of this internal os, this is said to be the body of the uterus, and it is measuring about 3 centimeter in length. This point where you are seeing here, this is an internal os, and this is also known as anatomical internal os, and this is a very constricted area. Okay, narrow area, and here just below the internal os is the histological internal os. The area from this internal os to this histological internal os, that area is said to be the isthmus. Okay, that is the second part of the uterus. Corpus is the first part of the uterus, which is about 5 centimeter in length. Now the isthmus is how much centimeter in length? Isthmus is 0.5 centimeter in length. Next comes the cervix. Okay, from where to where the cervix is? Cervix is from the area of this histological internal os till the external os. So this area, what this area is said to be what? This is a cervix area. And how much the measurement of the cervix is? The measurement of the cervix is around 2.5 centimeter. Is that clear till here? Okay, so this is the corpus that is from the fundus till this area, internal os area, and from the internal os area to the histological internal os, that part is known as the isthmus part. And from the end of the histological internal os till the external os, this the end of the mouth of the cervix, this is said to be the cervix, and the rest part is known as the vagina. Is that clear? Now we let us see about this cavity. Okay, so this triangular area which you people, here it is, the cursor is moving, you can see here, this area is also known as what? Body cavity of the uterus. What it is said to be? The body cavity of the uterus. There are certain secretions present in this body cavity of the uterus. So I was telling you about the body cavity. So what is this body cavity? This triangular area is known as the body cavity. Here there are some secretions, and those secretions are scanty. That is means they are less. Okay. Now here comes the area. This is known as the cervical cavity. This here you can see where the cursor is moving. This is known as the cervical cavity, and this is the body cavity. In this cervical cavity, there are presence of some secretions, and those secretions are alkaline in nature, and those are containing fructose, sodium chloride. Okay, so these are certain secretions of this cervical cavity. Further, as I discussed you about the parts of the uterus also, I told about the body, I told about the isthmus, and I told about the cervix, and even I told about it is having the two fallopian tubes also, and I told you about the there are pairs of the ovaries also. Okay, next we will move on towards the layers of the uterus. What are the
layers. This shape also I told you, this cervical cavity, what is the shape of the cervical cavity? The shape of the cervical cavity is the fusiform shape. Remember this one. Okay, again it will be a 1 mark question also. Next, the layers of the uterus. The layers of the uterus is been divided into 3 parts. That is the perimetrium, myometrium, and the endometrium. Perimetrium is what? Perimetrium is the outer layer of the uterus. Okay, and the myometrium is the middle layer of the uterus, and endometrium is the inner layer of the uterus. So, this perimetrium, which is the outer most layer, and endometrium, which is the muscular layer, and the endometrium, which is the inner layer. This endometrium inner layer is also when during the pregnancy, this endometrium is termed as what? Decidua. Okay, what it is termed? It is termed as the decidua. And this endometrial layer is consisting of what? Ciliated epithelial cells. Okay, so this ciliated epithelial cells also help in the the implantation of the ovum and all. Okay, then this endometrium, what it is, we are calling it this, it is called as decidua. Is that clear? And next we will see about the blood supply, from where the blood supply is taken to the uterus. The blood supply to the uterus is mainly through the uterine arteries and the ovarian artery for the ovary, and vaginal artery for the vagina. And from where these arteries are arriving from? These are arriving from the internal. These are the branches of the internal iliac arteries. Where these arteries are coming from? Arteries are from the internal iliac arteries. Okay, and the similarly with the venous drainage, iliac artery is the artery supply, and iliac veins are the venous supply. From there it is getting the venous supply also. Is that clear? So this was about the uterus. Further we will see the structure of the internal structure of this uterus also. We'll begin with the functions. So what is the function of our reproductive system? The main function of the reproductive system is to produce the sex hormones, that is the estrogen and the progesterone, and it is also producing the egg, that is said to be the ova, which we will deal in the ovary, and we will come to know in the ovary also how the oogenesis is taking place, how the ovum is also coming. Then it will be supporting and protecting the embryo. Once the zygote is formed after the fertilization, after the fertilization, it is what it is doing, it is giving support and protecting the embryo also, and uterus is also helping to give birth to the baby. Okay, now we will have to know about the what are the major organs of the major organs. The major organs in the female reproductive, that is in the uterus, are the cervix, the vagina, the ovaries, the uterine tubes, and the uterus, complete uterus. Okay, so coming to the cervix, what is, from where to where we said the cervix? Cervix, from this the end of the histological internal os till that, from the area till the external os, we are what we are saying, that is the cervix. The lower portion or the neck of the uterus, it is also known as the lower part of the lower portion of or the neck of the uterus. Then this cervix is lined with what? A mucus, that is known as the cervical mucus. Cervical mucus, what is the use of the cervical mucus? It is helping for the lubrication and also the sperm support during the sexual intercourse. And what is the another function of this cervical mucus plug? It helps in the secretion, that is the ovulation secretion, and because of this one there is a response of the estrogen level also. Then the egg is, if the egg is ready for the fertilization, means that time this cervical mucus plug makes it slippery, that is it will become thin and it will become slippery, and it gives a friendly environment to the sperm. Is that clear? Cervix, which is also known as the lower portion of the uterus or the neck of the uterus also, and it is lined with a mucus known as the cervical mucus. What is the use of the cervical mucus? Because it is helping in the lubrication and help in the sperm transport during the sexual intercourse, as well as during the ovulation also, and cervical secretion increases in response to the estrogen. And when the egg is getting fertilized, during that time this mucus plug becomes thin, slippery, and it gives a friendly environment to the sperm. And at the end of the pregnancy, this cervix acts as a passage for the baby to the external world, that is it is pushing the baby into the vagina to the external
word. During the end of the pregnancy, this cervix is expanding about 50 times its normal size. More than 50 times it is been expanding because it needs to give birth passage for the baby. Next, about the vagina. What is vagina? Vagina is a muscular rigid sheath, and it is connecting the external genitalias to the uterus. External genitalias को uterus से जो connect करने वाला जो पार्ट जो है इसको अपन क्या कहते हैं? वजाना कहते हैं। और इसका क्या फंक्शन है? इसका टू वे फंक्शन है। एक फंक्शन ये है, ये दिस इज हेल्पिंग फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, that is for the penetration, and even for the penetration of the sperm also during the coitus, and other function is to give birth for the baby. Through the vagina only the baby comes out to the external world. So this is all about our uterus. So just once again I will revise the topic. ओके एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमने क्या क्या देखा इसमें। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस क्या है? एक यूट्रस एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें यूट्रस में क्या क्या पार्ट्स हैं। इसमें 2 फेलोपियन ट्यूब्स है और 2 ओवरीज है, लेफ्ट एंड राइट फेलोपियन ट्यूब, लेफ्ट एंड राइट ओवरीज। ओके और इसमें इसको अपन कौन सी शेप में कहते हैं? इसको क्या शेप कहते हैं? अपन पायरिफॉर्म शेप कहते हैं। और इसका मेजरमेंट कितना है? 8 सेंटीमीटर लंबाई में है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई में है और 2.5 सेंटीमीटर इसका मोटापन में इसकी साइज है। और इसके साथ साथ में इसकी वेट कितना है? अराउंड 50 to 60 ग्राम्स इसका वेट है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था इसमें? अपन इसमें पार्ट्स देखे थे। पार्ट्स क्या क्या था? 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक कॉर्पस है और कॉर्पस के बाद इस्थमस है, इस्थमस के बाद सर्विक्स है। कॉर्पस कहाँ से कहाँ अपने अपन ने ये बॉडी ऑफ दी फंडस, जो फंडस की जो ये फंडस है वहां से लेके यहाँ पे जो इंटरनल ऑस का एरिया है, इतना एरिया को अपन ने क्या कहा? कॉर्पस कहा। और ये कितना सेंटीमीटर है? ये 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट पार्ट उसी में बॉडी कहा। बॉडी कहाँ से कहाँ अपन ने जहाँ पे इंसर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब है वहां से लेके इंटरनल ऑस की एरिया तक जो एरिया है उसको अपन ने क्या कहा? बॉडी कहा। इसके कितना सेंटीमीटर है? अराउंड 3.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में हमने इस्थमस कहा 0.5 सेंटीमीटर। ये जो इंटरनल ऑस है, इंटरनल ऑस से 1.5 सेंटीमीटर जस्ट नीचे और एक ऑस आता है, उसको अपन क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। और इंटरनल ऑस को दूसरा वर्ड क्या है? एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस। ये जो 0.5 एरिया है उसको अपन क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। और वहां से लेके एट द एंड ऑफ द cervix, that is the mouth of the mouth, this external os, we are seeing what it is the cervix. Okay, and this measures about 3.5 centimeter. Is that clear? And here we have seen the cavity. Okay, this is known as the body cavity. ये body cavity है, uterus की body cavity है। इसमें some secretions रहते हैं and those secretions will be scanty. Okay, this is a cervical cavity and इसका साइज, इसका शेप कैसे है? इसको अपन क्या कहते हैं? फिजिफॉर्म शेप कहते हैं। ओके यहाँ पे भी कुछ सेक्रेशंस रहते हैं जो अल्कलाइन इन नेचर रहते हैं और उसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है और सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है। Is that clear till here? And further हमने क्या देखा? हमने 3 layers of the uterus देखा, that is a perimetrium, myometrium, endometrium. Perimetrium outer layer था, myometrium muscular layer middle layer था और endometrium inner layer था। endometrium जो है ciliated columnar epithelium से बनाया हुआ है। और वो जो endometrium जो प्रेगनेंसी टाइम में उसको अपन क्या कहते हैं? डेसिडुआ कहते हैं। और यूट्रस का ब्लड सप्लाई कहाँ से है? यूट्रस को ब्लड सप्लाई मिलता है इंटरनल इलियाक आर्टरी, वो फर्दर ब्रांचेस होके यूट्राइन आर्टरीज, ओवरियन आर्टरीज और वजाइनल आर्टरी बोल के ऐसे वो डिवाइड होके यूट्रस को ब्लड सप्लाई देता है। उसी तरह है वीनस ड्रेनेज भी इंटरनल इलियाक वेन से होते हैं, दैट इज द यूट्राइन वेन्स एंड ओवरियन वेन से सिमिलरली वो वहां से ब्लड सप्लाई उसका होता है। नेक्स्ट हम उसका फर्दर हमने उसका फंक्शंस देख रहे थे। फंक्शन में क्या है? सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन करने में हेल्पफुल होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों सेक्स हार्मोन से। एग प्रोडक्शन में हेल्प करता है और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने में हेल्प करता है और बेबी को बर्थ देने में भी ये हेल्प करता है यूट्रस। ओके उसके बाद में हमने देखा मेजर ऑर्गन्स क्या क्या थे यूट्रस में? सर्विक्स, वजाना, ओवरीज एंड यूट्राइन ट्यूब्स। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? लोअर पोर्शन और नेक ऑफ द यूट्रस कहते हैं। हियर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्लाइड में है ना, ये बॉक्स एरिया जो दिखाया है इसको अपन क्या कहते हैं? दिस इज द सर्विक्स एरिया। और ये वजाइना का जो ऊपर एरिया जो है इसको अपन क्या कहते हैं? सुप्रा वजाइनल पार्ट भी कहते हैं।
ओके। और ये सर्वाइकल सर्विक्स के पास एक म्यूकस रहती है, उसको क्या कहते हैं अपन, सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं। ये क्यों रहता है, इसका फंक्शन क्या है, ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प होता है, ताकि इससे क्या होता है, इजीली स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और दूसरा इसका ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, ये सर्वाइकल म्यूकस जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज होता है। किस लिए इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन लेवल, रेस्पॉन्स, ईस्ट्रोजन रेस्पॉन्स के कारण ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज होता है। और साथ ही साथ में क्या होता है, जब ओवम जो है जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है, उस समय में ये जो सर्वाइकल म्यूकस प्लग जो है वो क्या बनती है, थिन बनती है, स्लिपरी बनती है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट देती है स्पर्म को इजीली उसमें पेनिट्रेट होने के लिए। और साथ ही साथ में ये प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो जाता है, बर्थ पैसेज बन के थ्रू द यूट्रस इनटू द वजाना ये एक पैसेज दे देता है। और ये सर्वाइकल्स का जो पार्ट जो है, एंड पार्ट जो एक्सटर्नल ऑस जो कह रहे हैं, जो सर्वाइकल कैनाल जो है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉर्मल विड्थ से भी 50 गुना ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इट विल गेट एक्सपैंडेड। ओके। देन आई टोल्ड यू अबाउट द वजाइना। वजाइना का है, ये भी एक मस्कुलर रिजिड शीथ है, और ये क्या कर रहा है, एक्सटर्नल जेनिटलियस को यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है। और वजाइना में क्या है, प्रेजेंस ऑफ रियोगे है, फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स, दोज आर नोन एज रियोगेज। ओके। और इसका फंक्शन क्या है, इसका दो फंक्शन है वजाइना का। एक तो फंक्शन ये है कि है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, स्पर्म्स ट्रांसपोर्टेशन करता है, और साथ ही साथ में इसका दूसरा फंक्शन जो है वो बेबी को बर्थ देने में करता है। Hope so you understand the topic. If you have any doubts, you can just comment and tell me in the comment box. Thank you.